Hi guys, and welcome back to my channel, and if you guys are new to my channel then welcome. So today I will be testing out Kay Beauty's base products. So recently Kay Beauty launched their hydrating foundation. So I have picked up these two shades, and these are 130Y medium and 145N medium. So I couldn't get my exact match. ठीक है, एक ही foundation मुझे properly match नहीं कर पा रहा था. That's why I picked up these two foundations. So I will be mixing these two colors to get my match. I did try it in the store. यहाँ पर ऐसे swatch करके तो काफ़ी अच्छा लग रहा था. तो let's see a full face पर ये कैसा लगता है. This is basically a hydrating foundation and it is enriched with avocado plus mango butter, and it is priced at 1200 rupees and you get 30 grams of product. So Kay Beauty has launched I guess 20 shades इसमें, but उस 20 shades में भी एक ऐसा भी shade नहीं था जो मुझे properly match करे एक ही foundation से. So I was a little upset, इसलिए I had to spend money on these two shades. Not a problem. So I will be testing out this foundation today. Also I have picked up their HD loose setting powder and their matte compact, and then two of their blushers, Dusty Rose and Soft Nude. I absolutely love the colors of these blushers. And मैंने क्या खरीदा, उनका highlighter. I've picked up their illuminating highlighter. This one is in the shade Sunlit Gold. So today I will be testing out these base products. Then let's get started. So Kay Beauty hasn't launched any primer till now, so I will be using my Smashbox Photo Finish Primer Water today. This is also my recent purchase. मुझे हमेशा इसे try करना था, so आज मैं इसे try करने वाली हूँ. Love the bottle. ये travel size bottle है. तो पहले कैसा spritz दे देते हैं. Okay. Let's see actually ये primer work करता है कि नहीं, because कई लोग बोलते हैं it's just like a normal water, you know, it's just expensive. मैं जितने भी आज products use करने वाली हूँ, जो नए products है, उनका सारा मैं जो update है description box में लिखने वाली, so please check it out. So now let's spray it on my face. So उन्होंने अपने packaging पर लिखा है, this 3-in-1 primer and setting spray hydrates, preps and refreshes skin. It's an ultra fine mist. It was actually quite fine. Infused with electromagnetic water. Primes to create a sheer canvas for makeup. Revitalizes and adds radiance. Okay. And it is silicone free. And it is for all skin types. I'm just going to use my fan, guys, ताकि अच्छे जल्दी से dry हो जाए. It does feel a little, okay, little tacky, not too much. Has it added any radiance? Maybe thoda sa, zyada nahi. But my skin is looking good. So now let's apply the foundation. Okay, so this one is in the shade 130Y medium. Love the bottle, really nice bottle. Love the packaging. Kay Beauty की जो products हैं उनका जो packaging है मुझे बहुत अच्छा लगता है. And it comes with a pump dispenser. And हमारा जो दूसरा shade है वो है 145N. 145N medium, जो ये वाला shade है. So मैं आपको एक side by side comparison के लिए दिखा दूँ. Okay, so this one is 130Y medium and this one is 145N medium. So Y stands for yellow and N stands for neutral. So now I am going to mix these two shades. जो 130Y medium था, जब मैंने on its own ऐसे swatch किया था, it was light for me, and 145 was dark for me. So the best thing is to mix these two shades. So first I'm going to take a 130Y medium. Okay, I've taken 2 pumps of 130Y medium, and now I'm going to take like 1 pump of 145N medium. Okay, this looks good. So I'm going to mix it. The shade looks good. Okay,
This is our first layer. Let me just zoom you guys in. Okay, and now I'm going to blend this foundation with my e.l.f. sponge. Very good coverage right off the bat. I can tell you, very good coverage. हाँ, शेड भी बहुत अच्छी तरीके से मैच किया. You know what, I'm just going to go on Nykaa's website and I'm just going to quickly read out all the claims or features of this foundation so we have a better idea what it is supposed to do. It is hydrating and I can make out, like first application mein hi I can make out ki it is quite hydrating. As you can see, it is looking a little dewy. So let's read the features. It's a natural hydrated dewy finish foundation. It is definitely hydrating and it gives you that dewy finish. I can feel it's quite hydrating. And first application mein hi, first layer mein, it's looking quite natural. It's not looking at all heavy. Yeah, it's looking quite natural actually. Lightweight and second skin feel. Yes, it is actually quite lightweight and skin like finish. It is looking very natural. Ultra creamy luxurious texture. Locks in moisture. All day comfortable wear. Natural to high buildable coverage, so you can build up the coverage. Blurs imperfections and it is perfect for all skin types. So it comes in 20 different shades that are suited for every Indian skin tone and undertones and glides on like a dream. So it is definitely feeling extremely comfortable on my skin right now. जैसे आपने पहले देखा it was looking quite dewy, लेकिन अभी वो जो dewiness है वो कम हो चुका है. सो एक तरीके से अच्छा है बिकॉज अगर आपको ऑयली स्किन है, ऑयली नहीं लगेगा. सो इट्स ब्लेंडेड ब्यूटिफुली गाइस and it's not clinging to any dry patches. It actually has a skin like finish. Really good, really impressed. अब तक तो मैं बहुत impressed हूँ. अब एक काम करते हैं, दूसरा लेयर ऐड करते हैं और इस बार मैं डायरेक्टली अपने स्पंज से ही अप्लाई करूँगी इस फाउंडेशन को. It is looking very good guys, very good. It blended seamlessly. Okay, the finish is so beautiful. Can you see the difference? And it has given me such good coverage. With second layer also it's not looking heavy on the skin. वैसे ही मैंने बहुत कम फाउंडेशन लिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कवरेज की. बट विथ सेकेंड लेयर ऑल्सो बहुत लाइट वेट लग रहा है स्किन पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हैवी बिल्कुल नहीं लग रहा है. इट्स नॉट लुकिंग केकी एट ऑल. सो आई एम एक्चुअली लविंग द फिनिश, द कवरेज एंड द फील ऑफ दिस फाउंडेशन. आपने नोटिस किया जब मैंने सेकेंड लेयर भी लगाया वो इनिशियली कितना ड्यूई लग रहा था, लेकिन I would say that this foundation actually sets into semi-matte finish. Anyway, now on this side I'm going to apply this foundation with my Makeup Geek's face buffer brush. तो जितना भी फाउंडेशन था गाइस फिटरी डिश पे वो सारा ख़त्म हो चुका है. तो ब्रश के साथ भी इट्स गिवन मी प्रिटी गुड कवरेज. इट हैज़ ब्लेंडेड सीमलेसली. इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली स्मूथ. कहीं पे भी ड्राई पैचेस पे अगेन क्लिंग नहीं हुआ है. एंड मेरे जो पोर्स भी है काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक सम मोर फाउंडेशन. इतना भी मैंने लिया है. Guys, it is looking so good. Now I don't know ये प्राइमर वाटर के वजह से भी ये फाउंडेशन इतना अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक ऑन इट्स ओन ऑल्सो इसका जो टेक्सचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सो आई एम प्रिटी श्योर कि ये भी लाइक इसके टेक्सचर के वजह से भी इट्स ब्लेंडेड सो ब्यूटिफुली एंड इट्स लुकिंग सो स्मूथ. सो हमने दोनों साइड पे दो लेयर्स लगाए हैं. इस साइड पर आई अप्लाई द फाउंडेशन विथ माई ब्यूटी स्पंज और इस साइड पर फाउंडेशन ब्रश के साथ. एंड यू कैन सी इट, इट्स लुकिंग सो गुड. I am in love with this foundation. If you're looking for a really natural finish foundation, I think you guys are going to love this one. So अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज से मैं टेस्ट करने वाली हूँ तो देखते हैं
how it wears on me, but अब तक I'm extremely happy with this one. यहाँ पे जो है मेरे जो smile lines है यहाँ पर, वो भी थोड़ा वहाँ पे settle होने लग गया है, बट वो मेजॉरिटी ऑफ द फाउंडेशंस के साथ होता है, एटलीस्ट मेरे स्किन पर. सो के ब्यूटी डज नॉट हैव एनी कंसीलर. सो टुडे आई विल बी गोइंग इन विथ माई कवर इफेक्ट्स पावर प्ले कंसीलर. दिस वन इज इन द शेड G+ मीडियम 2. दिस इज ऑल्सो माई लेटेस्ट परचेज. सो कुछ दिन पहले सेफोरा पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कवर इफेक्ट्स के प्रोडक्ट्स पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा था. सो देन आई वॉज लाइक, एज इट इज़ आई वॉन्ट टू ट्राई दिस कंसीलर, सो आई माइट एज वेल परचेज दिस वन. सो बहुत ही अच्छे प्राइस में मिला मुझे. सो दिस इज़ अ कंसीलर and I've seen a lot of people loving this concealer. So this is how the wand looks like. So I'm just going to dot it like this. Where else? Have you guys tried this sponge? It is so good. Does it set quickly? Good coverage. But let me just blend it quickly वरना set हो जाएगा. I'm not sure अगर इसे जल्दी जल्दी blend करना है, but yeah, I get scared. Blend it really nicely. Gave me very good coverage. Good finish. Really nice. Very good. Let's apply some more, okay? ये थोड़ा सा ना येलो मेरे लिए, पर ठीक है. It's not bad. Guys, it's blended so beautifully. बहुत ही अच्छी तरीके से blend हुआ है. And it's looking so natural. I'm loving this concealer as well. Looking so much better now. So you must have noticed sometimes कि कुछ फाउंडेशन है यहाँ पे से कलेक्ट हो जाता है एंड थोड़ा सा अजीब लगता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी कलेक्ट नहीं हुआ है, गैदर नहीं हुआ है. It's looking pretty good. फाउंडेशन लिप्स पे लगा. I'm just going to clean थोड़ा सा. मुझे फाउंडेशन मेरे लिप्स पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई माई ColourPop's लक्स ऑयल. So now I'm going to set my under eyes with the HD setting loose powder. This one is in the shade Banana. So this is the outer packaging, and then wait, yeah. So this is how it looks. Really nice packaging. And even this one is enriched with avocado and mango butter. Okay. So avocado butter provides intense hydration to the skin while also reducing the appearance of age spots and wrinkles. And mango butter provides deep moisturization, making the skin supple and smooth while also brightening the skin and minimizing the appearance of fine lines. मैं अपने फाउंडेशन के बारे में ये बताना भूल गई कि it is not accentuating my texture. Okay guys, जो normal texture दिखता है थोड़ा सा तो दिखेगा ही, but it is not accentuating my textures or my pores. In fact जो मेरे pores है वो काफ़ी smooth और blur out लग रहे हैं. So this HD setting loose powder retails for $7.99. Let's apply this powder now. Okay. It's a finely milled powder guys. It is looking extremely smooth. पहले भी मेरे जो pores है वो smooth लग रहे थे, लेकिन ये powder apply करने के बाद वो और smooth लग रहे हैं. And अगर आप देखेंगे अब ये जो एरिया है काफ़ी matte लग रहा है, बट ड्राई नहीं लग रहा. ठीक है, मेरे जो अंडर आइज भी अभी काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं बिकॉज ये बनाना शेड है. रियली नाइस पाउडर. And now I'm going to set the rest of my face with the matte compact. This one is in the shade 130N medium, and even this one is enriched with avocado and mango butter.
आई थिंक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब में एवोकाडो एंड मैंगो बटर है ही. And this one is priced at 799 rupees. Love the packaging, such sleek packaging, very compact and travel friendly. And you get a full sized mirror, and this is the shade. Let's feel the texture. The texture is really smooth, very smooth, and बहुत ही easily blend होता है. आप देख सकते हैं. Very lightweight. So I'm using my Real Techniques blush brush to apply this powder. Oh, okay. Lot of kickback. Just tap like this. But आप देख सकते हैं फिर भी बहुत kickback है. Like I don't know. इट्स नॉट क्लिंगिंग ऑन टू ड्राई पैचेस. बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया. वैसे भी आपको बहुत ही कम प्रोडक्ट चाहिए, ज़्यादा पाउडर यूज़ नहीं करना है. So it definitely blended beautifully. It looks very seamless and it is lightweight. So now let's move on to the most exciting part of this video, और वो है इनके blushers. मैंने स्टोर में swatch किया था and they're so good. They blend so beautifully. So मेरे पास जैसे मैंने कहा 2 shades है, Dusty Rose and Soft Nude. So let's see आज कौन सा मैं अप्लाई करूँगी. And ये जो blushers है इनका प्राइस भी I think कुछ 799 रुपीज़ है. So yeah, so these blushes retail for 799 rupees and आपको ऐसा color coordinated packaging मिलता है. तो ये है हमारा soft nude, so pretty. And दूसरा shade है Dusty Rose. Dusty Rose is also too good. And ये है Dusty Rose. So side by side रखते हैं. This one is soft nude and this one is Dusty Rose. Soft nude, Dusty Rose. Let's swatch it on my hand. Just the formula, it is so buttery, so smooth. So this is Dusty Rose and this is Soft Nude. Today I'm going to apply Soft Nude. बहुत ही सॉफ्ट है तो उसकी वजह से बहुत ही किकअप है. It is such a pretty shade guys and it's blending very nicely and these blushers are pigmented. ज़्यादा लग गया, हम blend कर देते हैं. Also guys, these blushers are enriched with vitamin E and hyaluronic acid and आप देख सकते हैं ये matte finish blushers है. अब हम अप्लाई करेंगे उनका ये highlighter. This one is in the shade Sunlit and this one is also priced at 799 rupees. This is the packaging. सब सेम ही, compact के blushers के highlighter same packaging and this is a highlighter guys. Let me just swatch it on the back of my hand. Very smooth texture. ये highlighter भी काफ़ी pigmented है. So now I'm going to apply this highlighter with my Anastasia's A23 highlighter brush. इसका इतना किकअप नहीं है. Looks very nice, has a beautiful sheen to it. It's not at all glittery or shimmery. Has a very smooth texture, blended beautifully. It's a nice gold highlighter. अगर आपको कोई highlighter चाहिए जो बहुत natural दिखे और textures को emphasize ना करे ज़्यादा, then this is a good option. As you can see, it's looking pretty smooth on my skin. And I'm just going to थोड़ा सा blend it, क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ. Highlighters normally also guys, they tend to accentuate your textures, okay? But कभी कभी कुछ ऐसे formulas होते हैं जो इतना emphasize नहीं करते और उनमें से ये एक highlighter है. I'll just complete rest of my makeup and I'll see you guys very soon.
Okay guys, I'm done with the rest of my makeup. So on my eyes, I have applied Dusty Rose blusher and I've blended that blusher with Physicians Formula Butter Bronzer. जो mascara है वो है Maybelline का The Falsies Lash Lift Mascara and जो lipstick है वो है Faces की Intense Matte Lips Plus primer in the shade Tea Rose. So yeah, this is what I have done for today, and now I am going to set this makeup with my Skin de Nevia's the makeup finishing spray. All right, so मेरे first impressions क्या है? मुझे सारे products अच्छे लगे guys. Like honestly, I loved each and every product. Also, I loved Cover FX concealer and a Smashbox primer water. I think that primer also helped a lot with the way my foundation is looking right now. And guys, मैं अभी दूसरे लाइट में जाके मैंने अपना बेस चेक किया, मेरा स्किन कितना अच्छा लग रहा है, जो मेरे टेक्सचर्स भी ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं हुए हैं. And I am in absolute love with this foundation. This foundation deserves all the love, all the attention. Like it's 10 on 10 for me. It's a lovely foundation. And believe me, अगर आपका oily skin भी, you can still try this one, and I am sure you're going to love this one. And I loved both these powders, loose and pressed. दोनों ही matte finish powder है, blendable है, lightweight है, and looks really nice on the skin. And I also love this highlighter. आप देख सकते हैं, it's looking so smooth. It has this really beautiful sheen to it. It's not at all glittery, very smooth in texture. बहुत ही अच्छा ग्लो देता है. एंड फिर अगर हम इन ब्लशर्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि ये ब्लशर्स जो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, अगेन सीमलेसली ब्लेंड हुए. आप इसे बिल्डअप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, पर एक्चुअली ज़रूरत नहीं है. दीज आर वेरी पिगमेंटेड. ऑल्सो गाइस, इट्स 5 o'clock नाउ, so I will be wearing this makeup for at least 7 to 8 hours. तो जितने भी आज मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उन सारे प्रोडक्ट्स का जो अपडेट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने वाली हूँ, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन box. Overall, I loved each and every product today. I think all these products have performed beautifully and I'm very happy with my makeup. And first impressions say I will recommend each and every product. So this video comes to an end guys, and I really hope that you found it to be helpful, and I shall see you guys very soon in my next one. Until next time, keep reviving your own fashion.